Human health and disease. So first of all, what is actually the health? That is actually physical, mental, and social well-being is called as health. So we cannot say that physically a person is healthy means it should be a healthy individual. A person will be treated as a healthy only when physically, mentally, as well as socially it is fit. ठीक है, खाली फिजिकली डोले सोले होने से, खाली फिजिकली डोले सोले बढ़ा लेने से उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे. मेंटली इनबैलेंस हो सकता है, मेंटेलिटी अलग अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा, उसको हम मेंटली अनफिट बोल सकते हैं. सोशली द पर्सन इज नॉट मिक्सिंग विद अदर्स, आइसोलेटिंग फ्रॉम द अदर सोसाइटी. सोसाइटी में जो कल्चरल एक्टिविटीज होता है, गेट टुगेदर होता है, फैमिली फंक्शंस होता है, वो खुद को सेपरेट करके रखता है. मतलब क्या, सोशली इज ऑल्सो और सी इज ऑल्सो अनफिट. समझ में आ रहा है कि नहीं? So physically, mentally, and social well-being is called as health, and any problem which will interfere with this health issue will be called as what, a disease. Now, what is the difference between the disease and disorder? दोनों में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है. डिजीज क्या है ना, a type of conditions which is occurs in the body due to some agent is called as what, na disease. And if this is the problem related to your body with reference to your own body defect, then that is called as disorder. And what is the difference between the symptom and syndrome? The symptom एक particular क्या बोलते हैं ना, कैरेक्टर को बोलते हैं, एक particular what ना any kind of your abnormality को हम लोग बोलेंगे क्या ना, symptoms. Many symptoms, a collection of many symptoms, a group of many symptoms is called as syndrome. जैसे कि हम लोग पढ़े हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि एड्स का कोई पर्टिकुलर और परफेक्ट सिम्टम नहीं है. एड्स जो एचआईवी के थ्रू होता है वो आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अटैक नहीं करता है. दे आर अटैकिंग द इम्यून सेल्स ऑफ योर बॉडी टू रिड्यूस द इम्यूनिटी पावर ऑफ ए पर्सन. तो इम्यूनिटी अगर किसी का वीक हो जाता है तो डिजीज अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है उसका अडेप्टेशन क्या, उसका हैबिटेट क्या है, उसका लिविंग स्टाइल क्या है. इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स में जो सिम्टम्स होता है वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन. And this is why we cannot say this is the exact symptom for this particular disease AIDS. We have the collection of different symptoms may be there, and these are called as what syndrome. समझ में आ रहा है? We will discuss classification of disease first. First, we are coming to number A, congenital disease. Congenital disease means the disease which is present by birth. Disease which is present since from birth is called as congenital disease. So what are the congenital disease? We have number 1, disease due to chromosomal mutation. Disease due to chromosomal mutation. अब आप लोग ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़े, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल लिख के स्किप करूंगा. क्रोमोसोमल म्यूटेशन जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग डिजीज नहीं लिख रहे, मतलब सिम्टम लिख रहे. डाउन सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स. टर्नर हो गया,
डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जैकॉब्स सिंड्रोम, जिसको हम लोग डॉट सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है ना? या दैट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। Qn plus 1, Qn plus 2, Qn minus 1, Qn minus 2, trisomy, tetrasomy, या that is monosomy, nolisomy, पढ़े हो आप? किसी किसी के केसेस में क्या होता है ना, ऑटो पॉलीप्लॉइडी होता है, कहीं पे एलो पॉलीप्लॉइडी होता है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू क्रोमोसोम और रिलेटेड टू जीन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो कंसिडर व्हाट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिजीज. अब सेकंड है ड्यू टू जीन म्यूटेशन. यहाँ पे क्रोमोसोम का डायरेक्ट रोल नहीं है, although it is the role of what the gene supposed to be, we can say that is what the sickle cell anemia, color blindness, red green color blindness, पढ़े हो आप लोग? हेमोफीलिया और भी बहुत है, अल्केप्टोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया, बहुत सारे हैं. ये तीन आप लोग पढ़े इसलिए मैंने मेंशन कर दिया. एंड नंबर 3, the disease which is related to environmental factor. So due to environmental factor, इसके अंदर आप दे सकते हैं डिजीज सपोज टू बी, हम लोग बात किए थे एम्नियोसेंटेसिस में क्लेफ्ट पैलेट एंड हेयर लिप्स, याद है? क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप्स, ये टेराटोजेनिक के वजह से ही होता है, याद होगा. एंड दीज आर प्रेजेंट सिंस फ्रॉम द बर्थ, दैट इज व्हाई दे कम्स अंडर द कंजेनिटल. So these are not related to any chromosome or gene, but they are as present since from the birth, so are congenital. So ये था first classification, that is congenital disease, capital A. Now we are coming to capital B, acquired disease or adaptive disease. The disease which is present after birth, within lifetime, after birth, is called as what? The acquired disease. अब ये acquired disease और adaptive disease क्या ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, और दैट विल बी सेम टाइप फॉर द सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल? क्या होगा? सेम टाइप होगा. श्योर? कैसे सेम टाइप हो सकता है? मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे अडैप्टिव डिजीज? बिकॉज दिस इज द डिजीज व्हिच इज रिलेटेड टू योर अडैप्टेशन, एंड नॉट एवरीबॉडी हैव द सेम टाइप ऑफ अडैप्टेशन. All the individuals which are living और human being की बात करते हैं, क्या हम लोग सही तरीके से सब एक ही टाइप का एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक ही टाइप के कंडीशंस में रहते हैं, एक ही टाइप का हम लोग का फूड फीडिंग हैबिट है? डिफरेंट है. तो जो जितना हाइजीनिक कंडीशंस में रहेगा उसको इम्यूनिटी उतना क्या होगा ना, वीक होगा, वीक होगा. जो जितना हाइजीनिक में रहेगा वो उतना इम्यूनिटी वीक होगा. सब लोग उल्टा सोचते हैं ना, यही तो दिक्कत है. आप जाके अपने पेरेंट्स को समझाइए कि बहुत ज्यादा केयर मत लो, इसीलिए कुछ का खाना बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर मत लो, नहीं तो मेरा इम्यूनिटी इतना लो हो जाएगा कि पता नहीं हमको 1000 टाइप का डिजीज होगा. जस्ट इसीलिए क्वेश्चंस आता है कि मॉडर्न डे लाइफस्टाइल leads to gives rise to many different type of disease like your asthma. Susceptible ज्यादा हो जाता है क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है. जस्ट कंपेयर विद द सेम टाइप ऑफ, मतलब हम सेम एज ग्रुप का आप कंपेयर करिए, दोज हु आर लिविंग इन द स्लम एरिया, कुछ नहीं होता है उनको बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग. अरे भाई सिंपल है फंडा, एंटीबॉडी विल फॉर्म द इम्यूनिटी, राइट?
एंड एंटीबॉडी तभी फॉर्म हो जाएगा वो एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा। आप पहले से ही अपने आप को एक आइसोलेटेड कमरे में रखे हुए हो, फुल प्रोटेक्शन, एंटीजन आएगा ही नहीं तो आपका एंटीबॉडी फॉर्म कैसे होगा? अब जैसे ही आप उस कमरे को छोड़ के बाहर निकलेंगे, बाहर आपके इंतजार में बहुत बैक्टीरिया वायरस बैठे हुए हैं, आपको तुरंत अटैक करेंगे क्योंकि आपका बॉडी क्या है ना, ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस पावर। इसीलिए क्या है ना, प्रोटेक्शन भी जितना जरूरी है, एक्सपोजर भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम आप ऐसे करें आज से हम स्लम एरिया में रहना स्टार्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज करने से आपका बॉडी रेजिस्ट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। So acquired or adaptive disease, that is why it is vary from person to persons. It is related to the adaptation. And why it is called as acquired? Because we are getting the disease from within the lifetime, acquired करते हैं। उसके अंदर पर्सन्स को फीवर होगा तो सिम्टम से बात सिम्टम की नहीं है, बात है एक्सपोजर टू द कंडीशंस, बात है एक्सपोजर टू द कंडीशन। डिजीज तो फीवर तो बहुत सारे कॉज की वजह से होता है। फीवर क्या है ना, ड्यू टू, फीवर इज ड्यू टू व्हाट ना, पायरोजेन के वजह से फीवर होता है। एंड पायरोजेन क्या है ना, पायरोजेन आर दो केमिकल which will stimulate the body temperature to increase are called as pyrogens. तो पायरोजन तो कुछ भी हो सकता है, XYZ हजार टाइप के पायरोजेंस। Any chemical which will stimulate the body temperature to increase is called as pyrogens. And उसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स खाते हैं, दैट इज पैरासिटामोल। ये पढ़ोगी डॉक्टर बनोगी, रुको अभी से तुम उछल रही होगी डॉक्टर बना दीजिए, कैसे होगा? तो एक्वायर्ड डिजीज के अंदर हम लोग फर्स्ट आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। It is also called as infectious disease. Communicable मतलब क्या है? Will spread from person to person. So it will spread from person to person by agent. And that agent may be bacteria, may be virus, may be fungus, may be protozoa. And that is why it is infectious, because it is being occurred by the infection of some disease causing agent. And इसीलिए communicate करता है from the person to person. So under the communicable disease, we will have two different type of what? Now that is classification, or that is on the basis of agent, type of agent. On the basis of types of agent. जैसे कि A, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या डिजीज आ जाएगा? जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटेनस हो गया, बहुत सारे डिजीज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, प्लेग। चलिए आप ही का बात मान लेते हैं। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज? बैक्टीरियल। वायरल डिजीज में आप क्यों बोल रहे हैं? कंफ्यूज। तो स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, ऐसे तो बहुत है। चिकन पॉक्स है, डेंगी है, यो दैट इज व्हाट ना, चिकन गुनिया हो गया, ऐसे काफी डिजीज है। दैट इज योर व्हाट ना, कॉमन कोल्ड हो गया। वी विल डिस्कस वन बाय वन, बहुत सारे डिजीज हम लोग लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे अननेसेसरी लिस्ट बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर सी, दैट इज
योर हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज में क्या क्या आ जाएगा? तो जैसे कि एस्कैरियासिस, जैसे कि एलिफेंटासिस, हाँ, और फिलारियासिस। ये सब राउंड वॉर्म है कि दैट इज फ्लैट वॉर्म है? Scabious round worm. Elephantiasis also round worm. Taniasis all comes under the same, that is helminth. Maybe round worm, maybe flat worm. ऐसे तो बहुत सारे डिजीज, लिवर रॉट हो गया, ट्रिकोनोसिस हो गया, काफी डिजीज है। नंबर डी, प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआन डिजीज में एग्जांपल दीजिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है कि नहीं? एमोबायोसिस ड्यू टू एंटेमेबा हिस्टोलाइटिका। कालाजार due to leishmania, that is why it is called as leishmaniasis. We can say that is sleeping sickness. It is due to what? The trypanosoma causative pathogen is sleeping sickness. That is the reason why sleeping sickness is called as trypanosomiasis. giardiasis बहुत सारा है, हम लोग सिर्फ कॉमन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसमें भी सिलेक्टेड हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द जनरल डिस्कशन। नंबर ई, फंगल डिजीज। ट्राइकोमोनियासिस क्या है? कहाँ चली गई? वहाँ पे खुद सा था इस फंगल डिजीज में आते हैं, दैट इज रिंग वॉर्म, राइट? देन वी कैन से एथलेट्स फुट। ये मेनली हो गया, डिटेल्स में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, which of the following is the spirochetal bacteria? Spirochetal disease due to a special type of bacteria, and that spirochetal disease due to a bacteria, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा, means causing the disease syphilis. ट्रेपोनेमा पैलिडम पढ़े थे ना एसटीडी में, तो ट्रेपोनेमा causing the syphilis. ट्रेपोनेमा is a bacterial disease, but इसको फिर भी हम लोग बैक्टीरिया में इंक्लूड नहीं किए क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरोचेटल बैक्टीरिया। आपको असाइनमेंट सेक्शन में हो सकता है कि क्वेश्चंस मिले स्पायरोचेटल बैक्टीरिया, दैट इज ट्रेपोनेमा। So we are coming to the next, that is number next classification ये क्या था? On the basis of the causative agent. Second क्या है ना? On the basis of mode of transmission. Mode of transmission. On the basis of mode of transmission. That is, first is number one, contagious. Contagious means that is spread through physical contact or actual contact. फिजिकली टच करने से
फिजिकली कनेक्शन होने से तभी ये स्प्रेड करता है। इसके अंडर क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएगा ना, सिंपली एसटीडी आ जाएगा, ऑल एसटीडी आएगा कि नहीं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग नहीं, कॉलर 3, pertussis, measles, leprosy, mumps। इसको याद रखना जरूरी है। The list of the contagious disease which actually physically communicate by means of actual touch। फिजिकली टच करने से ये स्प्रेड होता है, contagious, spread through the physical or actual contact। सेकेंड टाइप है दैट इज नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस मतलब ये फिजिकली टच करने से स्प्रेड नहीं होता है, इट इज स्प्रेड बाय contaminated food and water, air contamination, droplet contamination। तो स्प्रेड बाय contaminated food and water, air, droplet, जो आपके माउथ से रिलीज होता है, जो नोज से रिलीज होता है, बहुत ही माइन्यूट वाटर पार्टिकल, उसके थ्रू बैक्टीरिया वायरस स्प्रेड करते हैं, passes through the air, through the contaminated food and that is what now water, and through the vector like a mosquito। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देखिए इसका जो स्प्रेड करने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका अलग है, नॉट बाय द फिजिकल कनेक्शन। बाकी आप लोग जानते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि यरमॉड, कॉलेरा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, दैट इज कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, एटसेट्रा। पढ़ेंगे डिटेल्स में धीरे। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, जस्ट वेट ताकि ये खत्म हो जाए। तो पहले हम लोग क्या किए थे, पिछले पेज में फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया था, कम्युनिकेबल डिजीज किया था। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज नंबर 1 दिया था, कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या आएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ये स्प्रेड नहीं करता है, so it is not spread from person to person, that is why it is called as non infectious disease or non communicable disease। उसके अंदर फर्स्ट आते हैं नंबर 1 डेफिशिएंसी डिजीज। Deficiency disease means it is due to a deficiency of हम बोल सकते हैं विटामिन्स, यस, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, एटसेट्रा। और आप लोग डिफरेंट चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़े, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसका दैट इज व्हाट that is night blindness or that is what xerophthalmia। विटामिन सी हो गया, इसका भी विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा। तो कुछ भी आप दे सकते हैं,
मिनरल डेफिशिएंसीज आप वाइटर दे सकते हैं विटामिन, दैट इज व्हाट आयोडीन डेफिशिएंसीज है कि नहीं? प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी gives rise to protein energy, malnutrition, क्वासियोकरेंट मैलाइसिस। हार्मोन डेफिशिएंसी आपके पास डायबिटीज है, एडिसन्स डिजीज है, बहुत सारे हैं। मैं लंबा लिस्ट लिख के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नंबर बी, degenerative disease. Degenerative means a non-functioning or malfunctioning of organs. आप लोग जानते हैं कि ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, ऑर्गन ठीक तरीके से फंक्शंस नहीं करता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से हेपेटिक डिजीज। समझ में आना होगा कि कौन सा ऑर्गन को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। रेनल डिजीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नर्वस डिसऑर्डर, urinary disorder, pulmonary disorder, it's clear है? यहाँ पे certain organs आपका properly function नहीं करता है। नंबर सी, allergic disease। The hypersensitivity of the individual certain nutrients which are called as allergen is called as allergy। And hypersensitivity क्या है हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो allergic disease में आप अस्थमा दे सकते हैं, देन आप दे सकते हैं सपोज टू एक्जिमा, हम लोग दे सकते हैं ही फीवर, एटसेट्रा। एंड द लास्ट नंबर डी, कैंसरस डिजीज। कैंसरस डिजीज मतलब you are what now forming the tumor, so it is the formation of tumor, and tumor को scientific language में क्या बोलते हैं? Neoplasm। form the different type of cancer, and जैसे कि हम लोग दे सकते हैं skin cancer, that is breast cancer, जैसे कि your what ना prostate cancer, जैसे कि urinary bladder cancer, blood cancer, etc. So this is the general classification of the disease, and we will discuss in the previous and next class the types of disease bacterial start करेंगे, ठीक है?